Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, intrude. To enter or involve oneself in a situation where one is not wanted or invited. इंट्रूड को हम हिंदी में बिना अधिकार के प्रवेश करना कहते हैं. उर्दू में दाखिल होना या घुसना. तेलुगु में आह्वानము లేకుండా ప్రవేశించు. For example, please do not intrude on their private conversation. Next word is intuition. The ability to understand or know something without the need for conscious reasoning. Intuition को हम हिंदी में अंतर्दृष्टि कहते हैं. उर्दू में शक या सोच. तेलुगु में अंतर्दृष्टि. For example, her intuition told her that something was not right. Next word is inundate. To overwhelm or flood with an excessive amount of something. Inundate को हम हिंदी में बहुत सारा कहते हैं. उर्दू में भरमार, तेलुगु में उप्पोंगिंचु. For example, the office was inundated with job applications after the advertisement. Next word is invade. To enter a place or region with the intention of taking control. Invade को हम हिंदी में आक्रमण करना कहते हैं. उर्दू में हमला करना. तेलुगु में పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవేశించు. For example, the army decided to invade the enemy territory. Next word is invalid. Not legally or officially acceptable, null and void. Invalid को हम हिंदी में अमान्य कहते हैं. उर्दू में नाजायज़. तेलुगु में चट्टविरुद्धमुगा. For example, the coupon was invalid because it had expired. Next word is invalidate. To make something invalid or not legally acceptable. इनवैलिडेट को हम हिंदी में रद्द करना कहते हैं. उर्दू में बातिल करार देना. तेलुगु में చెల్లదు, అమాన్యమైన. For example, the court decided to invalidate the contract due to a breach of terms. Next word is invaluable. Extremely valuable or precious, priceless. Invaluable को हम हिंदी में अमूल्य कहते हैं. उर्दू में बहुत कीमती. तेलुगु में अमूल्यమైనది. For example, the advice she gave me was invaluable in solving the problem. Next word is invariably. Always or in every case, without exception. Invariably को हम हिंदी में स्थिरता से कहते हैं. उर्दू में हमेशा. तेलुगु में स्थिरमुगा. For example, the old man invariably took a walk in the park every morning. Next word is invasion. The act of entering a place with the intent of taking control. Invasion को हम हिंदी में आक्रमण कहते हैं. उर्दू में हमला. तेलुगु में दाढ़ी. For example, the invasion of enemy forces caught the country by surprise. Next word is invention. The creation of something new or the discovery of a new process. Invention को हम हिंदी में आविष्कार कहते हैं. उर्दू में ऐजाद. तेलुगु में आविष्करणा. For example, the wheel is considered one of the greatest inventions in history. Next word is invest. To put money or resources into a venture with the expectation of profit. Invest को हम हिंदी में निवेश करना कहते हैं. उर्दू में सरमायाकारी. तेलुगु में पेट्टुबड़ी. For example, many people choose to invest in the stock market for long-term gains. Next word is investigate. To examine or inquire into systematically. Investigate को हम हिंदी में जांच करना कहते हैं. उर्दू में तहकीक करना. तेलुगु में विमर्शिंचुटा. For example, the detective was hired to investigate the mysterious disappearance. Next word is investment. The act of putting money into a business or project to earn a profit. इन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में निवेश कहते हैं. उर्दू में सरमायाकारी. तेलुगु में पेट्टुबड़ी. For example, real estate is often considered a secure long-term investment. Next word is invigorate. To energize or stimulate. Invigorate को हम हिंदी में मजबूत करना कहते हैं. उर्दू में जिंदा करना. तेलुगु में उत्तेजपरचु.
For example, a brisk walk in the fresh air can invigorate your mind and body. Next word is invincible. Unable to be defeated or overcome. इनविंसिबल को हम हिंदी में अपराजय कहते हैं, उर्दू में शिकस्त ना दे पाना, तेलुगु में असाध्य महीना. For example, the army considered themselves invincible after several victories. Next word is invisible. Unable to be seen, not visible. Invisible को हम हिंदी में अदृश्य कहते हैं, उर्दू में अनदेखा, नज़रबंद, तेलुगु में अदृश्यमु. For example, the magician made the rabbit disappear, rendering it invisible. Next word is invoice. A bill or statement of charges for goods or services provided. Invoice को हम हिंदी में चालान कहते हैं, उर्दू में चालान या invoice, तेलुगु में invoice. For example, the company sent an invoice to the client for the delivered products. Next word is invoke. To call upon or appeal to a higher power or authority. इन्वोक को हम हिंदी में आह्वान करना कहते हैं, उर्दू में बुलाना या तलब करना, तेलुगु में आह्वानिंचु. For example, the priest will invoke blessings during the ceremony. Next word is involve. To include or require as part of a process or activity. Involve को हम हिंदी में शामिल करना कहते हैं, उर्दू में शामिल करना, तेलुगु में प्रमेयम. For example, the project will involve collaborations with various departments. Next word is irate. Extremely angry or furious. Irate को हम हिंदी में क्रोधित कहते हैं, उर्दू में गुस्से वाला, तेलुगु में कोपमुगला. For example, the customer became irate when the product did not arrive on time. Next word is ironic. Happening in the opposite way to what is expected. Ironic को हम हिंदी में विडंबना कहते हैं, उर्दू में गैर मुतवक्के, तेलुगु में विडंबना. For example, it was ironic that the fire station burned down. Next word is irony. The expression of one's meaning using language that normally signifies the opposite, typically for humorous or emphatic effect. Irony को हम हिंदी में विडंबन कहते हैं, उर्दू में मजाक या तंज, तेलुगु में विडंबना. For example, the irony of the situation was that the firehouse burned down. Next word is eradicate. To completely destroy or eliminate. Eradicate को हम हिंदी में मिटा देना कहते हैं, उर्दू में ख़त्म करना, तेलुगु में निर्मूलिंचु. For example, the goal is to eradicate poverty from the community. Next word is irrational. Not based on reason or logic. Unreasonable. Irrational को हम हिंदी में तर्कहीन कहते हैं, उर्दू में बेअक्ल या बेतुका, तेलुगु में एक कारणम लेनी. For example, his fear of spiders is irrational because they pose no real threat. Next word is irregular. Not following a regular or predictable pattern, not conforming to established customs. Irregular को हम हिंदी में अनियमित कहते हैं, उर्दू में बेतरतीब, तेलुगु में सक्रामंगा लेनी. For example, the irregular shape of the rock caught the geologist's attention. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.